Life is result of consequences of your decision. Whatever decision you make, it has a consequence, good or bad, and that consequence is what you call as life. Hmm. Nothing else. So when people will take better decisions, ultimately their life is going to be better in terms of everything. Okay, relationship, health, wealth, finance, everything. Stick for your goal. आप अपने सपनों पर अड़े रहिए, जमे रहिए. You Mhm. think of doing good things, not just for yourself, but for the society, but for the nation, and strive for it. And the only, way you can change the things by being the change yourself. So Mhm. focus on you, and everything around you will change. Hi, Omar. Welcome to the Shubham Baviskar show again. Thank you so much for calling me again. Okay, so Omar, आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए. Acha, again. So yes, hello. This is Umair. I'm founder of Ambition Learning, a business coaching and consulting firm. Currently, I am 19 years old. I have clients from almost all industries, Mm-hmm. from all the spectrums. I have dealt with, currently dealing with, we can say, small and medium enterprises. So, hand holding them and supporting them to solve their own business challenges. Also, one of what we can say management team members in one of leading edtech companies for pregnant mothers called Garbha Mm-hmm. Sanskar Challenge. So proudly involved in building that thing. So yeah, this is about me. ओके सो उमर मतलब आपने आपकी जर्नी 15 या 16 एज में स्टार्ट की थी, राइट? Yeah, हाँ. तो 15. 15-16 एज की मतलब जो एज होती है उसमें टीनेजर्स को पता नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती है लाइफ में कि क्या करना है और चीज़ें कैसे फिगर आउट करनी है. तो आपने जर्नी कैसे स्टार्ट कर दी मतलब 15 एज की उम्र में? To be very honest ना शुभम दा, क्लैरिटी हमें उन्हीं चीज की आती है जिस चीज को लेकर के हम एक्सपोज होते हैं. हम्म. राइट, लाइक जो चीज हम अपने अवेयरनेस में लेकर के आती है, फिर जो चीजें हमारे अवेयरनेस में होती है, हमें उन चीज के बारे में क्लैरिटी होती है हम्म. और हम उन चीज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं जो चीज हमारे हम्म. कॉन्शियस में है. जो चीज हमारे कॉन्शियस में नहीं होती, वी कैन नॉट गो देयर. अगर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो जब बच्चा सेवेंथ एट्थ में होता है, तब हम्म. ऑटोमेटिकली पॉर्न एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कम इनटू द कॉन्शियसनेस. कभी ओके. कभार तो उससे पहले भी. एंड हम्म. नेचुरली किड्स गेट अट्रैक्टेड, दे हम्म. फ्लो हम्म. इन दैट जोन. सो कौन सी इंफॉर्मेशन की तरफ आप एक्सपोज हो रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई वाज लाइक 15 16 ना, लकीली, फॉर्चुनेटली, आई वाज एक्सपोज टू बिजनेस a lot. हम्म. My mother was running a clothing store, so I used to go and sit with her. My mentor, Dr. Vishnu Mane sir, he was the one who motivated me, like who planted that seed कि तुमको बिजनेस करना है, यू कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स, बट यू शुड गो फॉर बिजनेस. तो जब सेवेंथ एट में मैं इन सब लोगों से मिला एंड इनके गाइडेंस में आया, बिजनेस वाज द ओनली थिंग विच वाज ऑन माय माइंड एंड विच गॉट एक्सपोज टू मी. सो नेचुरली मेरे अंदर वो फ्लो बना कि हाँ, इस साइड जाते हैं. हम्म. तो जिस चीज पे आप, जो चीज आपके अवेयरनेस में आती है, दैट दैट बिकम्स योर थिंग इन दैट अर्ली एज, 15 16 साल की उम्र में. आप हम्म. देखोगे जब बंदा अगर कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहा रहता है, तो उसको बस यही लगता है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स. द वन हु इज लाइक डूइंग नथिंग, एवरीबॉडी इज कंसिडर लाइक कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्सन कि ये भाई आगे जाकर के क्या करेगा क्या नहीं करेगा. तो माय जर्नी वाज फ्रॉम द सेम ओनली. इनिशियल में ऐसे अवेयरनेस आ गया ड्यू टू माय हम्म. मेंटर, एंड देन कि हाँ, बिजनेस करना है, फिर उसको बिजनेस से रिलेटेड चीजें सर्च करना, सोचना. पढ़ना उतना ज्यादा नहीं, बट ठीक है, कभी कभार पढ़ भी लेना. हम्म. फिर वो बिजनेस से लिंक होते होते देन सेल्फ हेल्प वगैरह की तरफ आया. देन वो सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स, कोचेस, इन सबको सुनना, सेल्फ हेल्प की तरफ ये होना. तो वो वैसा थ्रेड चला. एंड दैट्स हाउ आई गॉट लाइक अ क्लैरिटी कि ओके, दिस इज द थिंग विच आई लाइक एंड आई वांट टू डू दिस.
हम्म बिकॉज इट केम इन माई कॉन्शियसनेस तभी, एंड देन फिर ओके मेरा लाइकिंग बढ़ने लगा। So for हम्म any like 15, 16-year-old or maybe 18-year-old, 19-year-old who is listening to this और जिसको क्लैरिटी चाहिए, सबसे पहली बात आपको क्लैरिटी उसी चीज में आएगी जो चीज आपके कॉन्शियसनेस में है। जो हम्म चीज नहीं है आप उसके बारे में कभी क्लियर हो ही नहीं सकते। तो बिजनेस करने के अगर थॉट भी है कि करना है, तो पहले बिजनेस को अपने कॉन्शियस में लाना पड़ेगा। उस हम्म वैसे सराउंडिंग्स थोड़े से डेवलप करने पड़ेंगे, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लैरिटी बनेगी ना उस किसी भी चीज के बारे में, राइट? राइट एक अल्टीमेटली इट्स दैट ओनली। हम्म आप अगर देखोगे तो लाइक क्लैरिटी का अगर हम मीनिंग भी निकालने के लिए जाए तो व्हाट इज क्लैरिटी? हम्म क्लैरिटी इज जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल, नथिंग एल्स। राइट द मोर क्लियर इंफॉर्मेशन यू हैव रिगार्डिंग लाइक पर्टिकुलर वन थिंग, उतने तुम क्लियर हो या फिर उतनी तुम्हारे पास में क्लैरिटी है। अपार्ट हम्म फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ डीप ये नहीं है क्लैरिटी का। तो जो भी ओके इंफॉर्मेशन आपके पास में है वो आपकी क्लैरिटी बन जाती है, ट्रू सिंपल। हम्म और मेंटोर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते राइट हमारे लाइफ में और मतलब आपको 15 एज में मेंटोर मिल गए थे राइट तो उसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी मिल गई और एक डायरेक्शन भी मिल गई तो आपको क्या लगता है कि मेंटोर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं मेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, लाइक इट्स बेसिकली, कैसे हम बोल सकते हैं ना, आपका सोर्स कोई तो चाहिए। हम्म सोर्स ऑफ सपोर्ट, सोर्स ऑफ नॉलेज, हम्म सोर्स ऑफ accountability, the person who will tell you what is right and what is wrong. हम्म Because most of the time na, when we are young, like I'm still young, 19. Okay, so जब ये वाला जो पीरियड फेज होता है ना, लाइक मिड ट्वेंटीज तक का, बहुत सारी चीजें feels good but they are not right. हम्म बहुत सारी चीजें feels bad but that thing is necessary to do. ओके And what we generally prefer is, and not just मतलब we यानी मैं भी आ गया उसमें, हम्म हम सब लोगों का नेचुरल जो कर्व होता है ना डिसीजन लेने का, वो फील गुड चीजों की तरफ होता है। हम्म आप किसी को भी देख लो, वी आर ऑलवेज थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स फील गुड थिंग्स। एंड यहाँ पे अ मेंटर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, हु विल यू नो हु विल यूज स्टिक एंड टेल यू कि बॉस, this is what you feel good, but this is what is right, even if it's feeling bad. So you should do what is right, not what just feels good. हम्म It can be anything. It can be regarding anything. It can be regarding relationships, dating, finances, the way you spend, what you learn, with whom you hang out, anything. हम्म वो एक सोर्स होना बहुत जरूरी है। फिर वो कोई भी हो सकता है, इधर मॉम, डैड, और सम टीचर, सम ओल्डर फ्रेंड, सीनियर्स, बट वो सोर्स होना बहुत जरूरी है जो आपको ग्रो होता हुआ देखना चाहे, और जो आपको अकाउंटेबल रख सके, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज दे सके। दैट लाइक हैविंग दैट काइंड ऑफ अ मेंटर इज ब्लेसिंग, I feel. And that's why like mentors are very important and we should consider mentors. And you will see the most what we can say, सबसे घटिया लाइफ उन लोगों की चल रही होती है जो अपने से ज्यादा श्रेष्ठ किसी को नहीं मानते। हम्म सबसे ज्यादा घटिया लाइफ उनकी चल रही होती है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से, फिजिकली भी। हम्म हम्म जो अपने से ज्यादा श्रेष्ठ किसी को नहीं मानते, उन सबके लगे पड़े होते हैं। Because what they do, they just keep on criticizing everybody apart राइट from them. For them, the world is the problem, not them. हम्म So hence they close their windows and doors for evolution, हम्म right? क्योंकि मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं अलग, मैं तो किसी को मुझसे ज्यादा तेज मानूंगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली मैं तो ग्रो करने वाला नहीं हूँ, राइट right? And if I'm not growing, then what is happening with my life? हम्म It's degrading. It is getting miserable. हम्म So for us to save ourselves from being miserable and to get off the track, mentors are very important. And my mentor have played a very major role in, like, he still plays, like, for grounding me. हम्म Like sometimes I remember DS said this sentence in one of the pep हम्म talk.
यू नो। हम्म, समय से पहले अगर पैसा या फिर ज्ञान अगर किसी इंसान के पास में आ जाए तो उसको अहंकार, हम्म, मतलब उसके अंदर अहंकार आने से कोई उसको रोक नहीं सकता अहंकारी राइट। बनने से। हम्म, Like no one can stop the ego of a man who have got money or knowledge before the time, हम्म, right? And in my case, currently I'm 19 years old. I just in the morning had a mentorship call. I was giving mentorship to a IIT and IM graduate. She's a हम्म, scientist and she is हम्म, currently developing something around natural conception for people with infertility. She's doing her हम्म, startup in that, and I was coaching her. हम्म, So when you do this sort of thing, which is really amazing for people from outside, and they praise you, वो ego चढ़ने लगता है, भले ही तुम हम्म, कितने भी भले इंसान क्यों ना हो. And if you don't have right set of people around you who will ground you like constantly, राइट। then there are high chances that तुम्हारे पैर जो है वो जमीन से ऊपर चले जाएंगे. एंड हम्म, जितना तेज यू विल फ्लाई, उससे कई ज्यादा मिजरेबल यू विल फॉल, या। just because of that one factor, because you will miss the check of reality. हम्म, Like my mentor Vishnu sir, he always does that with me. हम्म, He always gives me reality check. हम्म, And because he did that with me, now it has become my trait also. हम्म, All of my team members, all of my students, I treat them in a similar way. I teach them in a similar way. हम्म, Right? वो it really helps. Like when you have mentor, knowledge बहुत अच्छा मिलता है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है हर किसी प्रॉब्लम्स में. और आपको सक्सेस मिल जाने के बाद भी आप प्रिपेयर्ड रहते हो उस सक्सेस को रखने के लिए अपने पास. मेंटेन रखने के लिए। बहुत सारे लोग हम्म, सक्सेस मिलती है और छोड़, मतलब उनको छोड़ करके चली भी जाती है वो सारी चीजें. हम्म, इट हैपेंस वेरी क्विकली. इससे, राइट। बट व्हेन यू हैव अ मेंटर, इट डजंट हैपेंस. यू क्रिएट सस्टेनेबल सक्सेस फॉर यू, वी कैन से. हम्म, हम्म. और काफी जो टीनेजर्स होते हैं उनको एक इम्पोस्टर होता है सिंड्रोम, मतलब उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा यंग है और उन्हें वो रिस्क लेने से डरते हैं। ओके। और उन्हें लगता है कि मैं काफी यंग हूँ तो मैं बाद में चीजों को फिगर आउट कर लूंगा। एंड उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है और वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको आपको उनको क्या एडवाइस देना देना चाहोगे आप उनको? टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अभी अगर सोचा जाए कि टाइम बहुत है, हम्म। इज अ मिथ. ओके। इट्स सीरियसली अ मिथ. हम्म, 60-65 साल का एवरेज लाइफ है. हम्म, तुम कब निपट जाओगे तुमको पता नहीं है. राइट। बाय 20 यू आर वन थर्ड डन विथ योर लाइफ. या। ऑलमोस्ट. मैं तो अभी यही मान के चल रहा हूँ जिस प्रकार से डिग्रेड हो रहा है सब. हम्म, बाय 2025 वन थर्ड इज गॉन. राइट। हाँ। लेफ्ट इज टू थर्ड. हम्म, उसमें से अगेन वन थर्ड यू विल स्ट्रगल हम्म, टू मेक अ लिविंग. एंड उसके बाद जो लिविंग बनाई है, अगर अभी से क्लैरिटी लेकर के नहीं कोई चलेगा, उसके बाद जो स्ट्रगल से लाइफ गुजरेगी, देन इट विल बी लाइक अ पोस्ट मेंटेनेंस. योर लास्ट वन थर्ड जो होगा ना, 3 on 3 पार्ट जो होगा, 3.0 लाइफ वाला, इट विल बी अ मेंटेनेंस थिंग फॉर यू देन. हम्म, हेल्थ केयर के चक्कर काटो, मीडियोकर लाइफ जो, ऐसा लाइक, यू थिंक ऑफ इट शुभम दादा, राइट? या। मतलब सोचो इसके ऊपर में हम्म, ऐसे कि 25 साल तक जो करना है किया, उसके बाद या। में क्लैरिटी मिला, फिर 25 से 40 तक घिसा, घिस घिस हम्म, करके कुछ तो बनाया, 40 के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स लग गए, कुछ तो इश्यूज हो गए, अभी स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो लाइफ जिया कब? हम्म, टाइम नहीं है बॉस. राइट। टाइम है, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. टाइम नहीं है. तो हम्म, लाइक पीपल शुड बी इन हरी. मैंने शाहरुख खान का ये डायलॉग सुना था, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, आपके लिए चैन से सोना, खाना पीना, ये सारी चीजें हराम है. हम्म, एंड आई समवॉट अग्री टू दैट सेंटेंस. हम्म, I somewhat agree to that sentence. So, for somebody who is like 15, 16, 17, 18, 19 till 24, 25, it's a golden period for them to thrive. Thrive and try new things, do new things, हम्म, learn new things. It is a golden period to disrupt. हम्म, यहाँ पर if we say कि like बहुत टाइम है, आराम से करते हैं,
दिस दैट, ये अप्रोच से लेके चलेंगे तो कुछ भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं पाएगा। या। बिकॉज करेंटली आई नो, मैं 15 साल का जब था, तब का ये मैं, मेरी मेंटल एबिलिटी या फिर तब का मेरा जो एडेप्शन का लेवल था वो, हम्म। मैं 16 साल का बना तब का मेरा मेंटल एबिलिटी एडेप्शन का लेवल वो, मैं 17 साल का बना तब क्या मैं इवॉल्व किया, 18 का बना तब क्या इवॉल्व किया, एंड करंटली आई एम 19। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? इवन 1 year बैक आई थिंक सो वी हैड अ पॉडकास्ट व्हेन आई वाज 18, या। अपने राइट। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर किया था ना यस यस। ऐसे। हाँ। तो अभी लास्ट ईयर से लेकर के आई फील सो यू विल ऑल्सो बी नोटिसिंग द वे हम्म। आई स्पीक और द थिंग्स लाइक जो जिस तरीके से या आर्टिकुलेट हो रही है वो पर्सनैलिटी बदल रहा चेंज है हुआ है थोड़ा। हम्म। पूरा। पूरा, एक यस। हाँ। 180 डिग्री शिफ्ट आ हम्म। गया। एंड दिस 180 डिग्री शिफ्ट वो हैपन नहीं होता जब तुम 25 26 27 के बाद सीखना स्टार्ट कर, हम्म। ये उतना जल्दी शिफ्ट नहीं करता बिकॉज अभी, बिकॉज वी हैव नॉट formed those patterns of years and years, it हम्म। is easy for us to get shaped यस। like in a quick way. हम्म। But if we keep on wasting the life resources सारी चीजें, एक ये टाइम है एंड देन फिर अचानक से हम कोशिश करेंगे कुछ तो बना लेंगे, तो बहुत टाइम नहीं हो पाता। राइट। राइट, सो टाइम तो बॉस नहीं है। एंड हाँ, रही बात जो आपका और एक उसमें सवाल था ना कि रिस्क आपने पूछा मुझे, हाँ। मैं कि रिस्क लेने से ये करते हैं, तो हम्म। अब रिस्क, लेट्स से रिस्क क्या हो सकता है in a 16 17 18, I am assuming that till 22 years हमारी ऑडियंस हमको सुन रही है, 22 साल तक का है, यस। तो उस उम्र में रिस्क ऐसा क्या हो सकता है जो आप ले सको? हम्म। रिस्क इज अ myth at that time. या। What are the things which you can risk? Either it will be your name in your college friends group, या। this is one. हम्म। Second, it can be 1 or 2 of your academic years. हम्म। The राइट। maximum biggest is academic loss. हम्म। इससे बड़ा रिस्क नहीं है कोई, unless and until you're playing some financial game in हम्म। the thing. तो उसके एकेडमिक लॉस से बड़ा कोई रिस्क नहीं है, और एकेडमिक लॉस कवर किया जा सकता है। हम्म। आई हैव सीन पीपल हु हैव टेकन 3 4 years गैप एंड देन अगेन वेंट बैक टू डूइंग अ डिग्री। हम्म। मैं पर्सनली मिला हूँ ऐसे लोगों से। हम्म। अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं, बिकॉज आपके पास में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिसोर्स ही नहीं है जो आप खो दो ना। हम्म। आप फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो एटलीस्ट 22 years की एज तक, हम्म। तभी वो आपको बच्चा ही समझते हैं कि ठीक है ये तो अभी अभी सीख रहा है, बढ़ रहा है ऐसे। ना आप मैरिड हो, ना आपके बच्चे हैं, ना हम्म। आपके ऊपर प्रेशर है अर्न करने का, ना ही आपकी मार्केट में 20 30 25 साल की रेपुटेशन है जो खराब हो जाएगी किसी एक राइट। गलत डिसीजन की वजह से, ना ही यू हैव इन्वेस्टेड crores इन दैट one idea of yours that you हम्म। will lose everything in your life if that ideas went bust. Technically there is no risk, there is राइट। only experiences and exposures for हम्म। somebody. Like, if you will consider me, for me starting a consulting thing was a risk free thing, no हम्म। risk, फाइनेंशियल स्टिक्स कुछ नहीं थे। हम्म। मेरा एज सच कोई एज अ कंसल्टेंट और एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट कोई रेपुटेशन नहीं था कि मैं एक गलत एडवाइस दे दूंगा और सब खराब हो जाएगा, हम्म। ऐसा कुछ नहीं था। ना ही लोग मेरे ऊपर कुछ कमेंट पास करने वाले थे या फिर मुझे क्रिटिसाइज करने वाले थे, अरे ही इज अ सो बिग गाय एंड स्टिल हिज स्ट्रेटजीज डोंट वर्क। लास्ट में अगर कुछ काम नहीं भी आता मेरा कंसल्टिंग लोग को, तो वो लोग क्या बोलते, बच्चा है, और हंस के छोड़ देते। राइट। इसके अलावा रिस्क क्या है? इसके अलावा हम्म। तो कुछ भी नहीं है ना। राइट। Especially the young people who are starting out, I believe, like me, who are like students, they have very minimal things to lose and they have everything to gain. हम्म। So रिस्क का कॉन्सेप्ट वो मुझे नहीं लगता उतना यू you नो ये है वैलिड है इस इसमें, हम्म। क्योंकि कुछ स्टेक्स ही नहीं है। रिस्क तभी बनता है ना जब आप कोई स्टेक्स लगाओ अपने, तब जाके रिस्क बनता है वो चीज। अभी तो है ही नहीं तो क्या लगाओगे? राइट। राइट। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस पे क्या थॉट्स है?
social media distraction, to be very honest, uh, it is designed in a way that it will keep you hooked. राइट. हम्म. बनाया ही उसको इस तरीके से हम्म. कि वो आपको हुक करके रख सकता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजनेस, दे आर नॉट रनिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की, और दे आर नॉट सोशल वर्कर्स. राइट. That's their business. The longer you stick to their platform, they are going to make money out of it, हम्म. राइट. right? हम्म. So there is no way that you can search something on social media ki how do I manage my distractions, and you will get a solution. No. But here, just like we discussed in the last podcast ना, यहाँ पे सारा game awareness का है. हम्म. The राइट. simple understanding of anything which I'm paying my attention to, or anything which I'm giving my time to, is it serving me or is it not serving me? डिफरेंशिएट करते आना चाहिए. हम्म. Absolutely, that only one thing. जब ये एक क्वेश्चन आ गया ना मन में कि ओके आई वांट टू डू पॉडकास्ट विद शुभम दादा, हम्म. दैट पॉडकास्ट इज इट सर्विंग मी और माय गोल, or is हम्म. it not serving me? राइट. It's serving me. That's why I'm here sitting in front of you, and we have allotted this time to have this conversation. It हम्म. is serving my goal to create an impact, या. right? हम्म. That's why I gave my time and attention. So when we have this one clear consciousness ki what is serving me, what is not serving me, हम्म. and ये सर्विंग नॉट सर्विंग का इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा? कोई तो एक गोल चाहिए लाइफ में. ओके. इफ डायरेक्शन लेस है कोई इंसान, तो वो कहीं भी फ्लो होता चला जाने वाला है, अगर हम्म. उसका कोई डायरेक्शन सेट नहीं है कि मुझे इसमें मूव करना है. तो फर्स्ट कम्स डायरेक्शंस, देन कम्स कॉन्शियसनेस. हम्म. इज इट टेकिंग मी क्लोजर और इज इट पुटिंग मी अवे? राइट. इफ इट इज टेकिंग मी क्लोजर, आई विल बी डूइंग इट. हम्म. बट इफ इट इज यू नो पुलिंग मी अवे, हम्म. तो फिर वो करने का मतलब ही नहीं मेरा. राइट. सिंपल अवेयरनेस का ही है. लाइक आई एम नॉट अ बिहेवियरल थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट टू टेल कि हम्म. ओके सो माइंड में ऐसा होता है एंड देन पीपल गेट ट्रिगर्ड. फॉर हम्म. मी इट्स अ डिसीजन. या. आइदर यू डू और यू डोंट. इट्स वेरी सिंपल. हम्म. वो डिसीजन आप खुद ही बनाते हो. अब कुछ लोग कॉन्शियसली बनाते हैं, तो वो निकल जाते हैं, वो इस ट्रैप को ब्रेक ब्रेक थ्रू करके चले जाते हैं. और जो लोग कॉन्शियसली नहीं बनाते, वो स्टक रह जाते हैं. हम्म. If you listen to Dr. Velumani, na, हम्म. he uses this, like he says punchline. हम्म. Life, life is results. Like life is result of the consequences of your decision. राइट. So punchline for your audience from me. Life is result of consequences of your decision. Whatever decision you make, it has a consequence, good or bad, and that consequence is what you call as life. हम्म. Nothing else. So when people will take better decisions, ultimately their life is going to be better in terms of everything. Okay, relationship, health, wealth, finance, everything. राइट. और बहुत सारे टीनेजर्स के ड्रीम्स होते हैं, लाइक उन्हें बड़ी बड़ी चीजें करनी होती है, उनके पास आइडियाज होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या चीजें रोकती है वो चीजें करने से? हम्म, मैं एक बिजनेस कोच की तरह समझाता हूँ, ठीक है. हम्म. आई हैव दिस प्रॉब्लम विद मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स. हम्म. सर टीम टैलेंटेड है, हम्म. लेकिन टीम कंट्रीब्यूट नहीं करती, टीम काम नहीं करती, क्या करे? हम्म. सो आई हैव दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या तुमने टीम को बताया कि उन्हें क्या करना है हाँ करके? हम्म. एक उसमें बताने का क्या है? वो तो इंटरव्यू में लाइक क्लैरिटी है ना उनको, उनका जॉब क्या है उनको तो पता है. मैंने बोला नो. हम्म. Until and unless you tell somebody what his or her role is, you cannot expect performance from them. In ओके. the similar way, no matter how many ideas you generate, unless and until you develop a clarity of हम्म. what my next steps are going to be in order to fulfill and in order to achieve this idea, हम्म. there will be nothing ओके. practical, na? Because हम्म. ultimately, clarity of actions will result into execution.
हम्म, I know I need to perform these 10 things. Then there's a possibility that I'll execute one of them. राइट। हम्म, Currently, what is the state? I am only having idea, I am only having dreams, but I हम्म, don't have clarity. Then how do I generate clarity? I meet mentors, I meet people who can help me doing that. I talk about it, I do my research on it, and then I get the idea. कि, राइट। okay, this is step one, step two, step three, step four. Then हम्म, I execute. Then maybe I fail. Then I reiterate. And then I again execute. Right? हम्म, This is simple thing. जो भी आपको करना है, जो भी आपका as such, idea है, उसके लिए first do the homework, do the research part. हम्म, कि what are my next steps? And is it a valid idea or not? Mentors से पूछो, industry experts से पूछो, Google से पूछो, किसी से भी पूछो. हम्म, लेकिन नेक्स्ट स्टेप फिगर आउट करो, उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचो, इम्प्लीमेंट करने का देखो, इम्प्लीमेंट करके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो देखो. इफ रिजल्ट्स आर गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हम्म, सक्सीडेड. इफ रिजल्ट्स आर नॉट गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बिकॉज यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. हम्म, इम्प्लीमेंटेड एंड अगेन एग्जीक्यूट. दैट्स द अल्टीमेट गेम. राइट। तो आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो आपको कुछ फियर्स होंगे या फिर लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे, तो आपने वो कैसे ओवरकम किए थे फिर? बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना. Even हम्म, sometimes, like maybe till last year also, I had this little voice in हम्म, me that I'm too young. हम्म, People also used to say, too हम्म, young to be a coach, too young to be a, trainer, too young to be a consultant. But हम्म, then I realized, like, the things which I'm doing for any of my client, like हम्म, currently I work with my mentor also. I हम्म, work in Garbha Sanskar Challenge, हम्म, and I do a lot of things there also. So are हम्म, these things producing results? So yes, they are. okay, Are are we having clients who are IITs and IIM graduates, हम्म, scientists, the people who are 2x, 3x older than me, and they are happy out of the whole process? Yes, हम्म, they are. So why should I believe a myth when I have facts? राइट। People are happy. हम्म, People are happy. They are getting results. हम्म, They're having everything. या, सो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, लाइक ऐसे सोचने का कि शायद तुम्हारा एज कम है and शायद तुम नहीं कर पाओगे. मैंने किया है ऑलरेडी, मेरे सामने फैक्ट है. एंड हम्म, फॉर दिस फियर टू गो अवे, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी चीज वो इंसान कर रहा है, ही शुड अचीव मास्टरी ऑन हिज और हर आर्ट. जो भी कर रहे हो हम्म, उसमें वर्क ऑन योर सेल्फ सो मच that your level of skills and competencies हम्म, beats the level of critics राइट। or that fear which you have. Because ultimately, when you will work with yourself, ultimately, when you will work on yourself, you will produce results. So you will have a what we can say evidence to your brain हम्म, कि नहीं बॉस, मैं कर सकता हूँ और मैंने कर कर दिया है, कर पा रहा हूँ मैं. एंड तब जाकर के ये फियर जाएगा. आप हम्म, सोचोगे नहीं नहीं, फियर जाएगा तो मैं कुछ करूंगा, नहीं तो तब तक मैं नहीं करूंगा. हम्म, ये नहीं होता. राइट. हर इंसान जो अंडर प्रिविलेज है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो यही सोचता है उठते बैठते सोते जागते कि पैसा आए तो मैं कुछ करूंगा. एंड रिटर्न हम्म, में पैसा भी उसको ऐसे ही बोलता है, तू कुछ करेगा तो मैं आऊंगा. राइट। अल्टीमेटली फियर वैसे ही जाएगा. जब आप कुछ करोगे तब फियर जाएगा. हम्म, स्विमिंग पूल के बाहर बैठे किसी ने स्विमिंग नहीं सीखी, हम्म, उसके लिए एक स्टेप पहले लेना पड़ा आगे. उसके पहले किसी ने जंप मारना पड़ा जा करके. दैट इज द अल्टीमेट थिंग व्हेन इट कम्स टू फियर एज वेल. हम्म। ओके, सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस को? The final message. या। See, there are a lot of things going on in this world. Okay. हम्म, ऑलरेडी बहुत ज्यादा chaos चल रहा है इस दुनिया में. इस हम्म, दुनिया में छोड़ो, अपने कंट्री में ही बहुत ज्यादा chaos चल रहा है. There are people who are on extremes of everything. हम्म, Somebody shouting good things, somebody shouting negative things.
there is too much of noise, but don't get this noise distract you from your goal. ये आवाज जो ये जो शोर शराबा चल रहा है, इसको आप आपके जहन में जाने मत दीजिए. हम्म। यू स्टिक फॉर योर गोल. आप अपने सपनों पर अड़े रहिए, जमे रहिए. यू हम्म। थिंक ऑफ डूइंग गुड थिंग्स, not just for yourself but for the society, but for the nation, and strive for it. And the only, way you can change the things by being the change yourself. So हम्म। focus on you, and everything around you will change. So that's the like final message I would like to give. Just focus on yourself and don't let the outer things affect you much. Remember, your journey is inside out, not outside in. हम्म। Whatever you are inside is going to reflect outside, maybe in upcoming 2, 3, 4, 5 years, या। right? So focus inwards, build something beautiful inside, so that world will follow you, हम्म। and world around you will get beautiful due to just that one thing. राइट। ओके, Yes. सो बहुत मजा आया भाई बात करके। और इस एपिसोड से बहुत वैल्यू मिलने वाली है, और स्पेशली यंग ऑडियंस को। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और आपने बहुत सारी Thank you so वैल्यूएबल much, इंसाइट Shubham, शेयर for किए। having. या। Thank you so much for having me. It is always a pleasure. अब अगला पॉडकास्ट में 20 का हो जाऊंगा तब करते चलेगा। डन। हैं. ओके। Yes, all the best for you also. बहुत अच्छा कर रहे हो आप. ऐसे ही या, करते रहिए. थैंक यू। Please keep adding value. Thank you यस। so much. Signing off.